There's a simpler way forward. Don't release our temples. Declare yourself a Hindu state. Don't leave Bharat for California. Bharat is the battleground and Bharat is the way of the future. यही नहीं, अभी और सुनिए। संस्कृति को बचाने से पहले परिवार को बचाइए। जो आपके बच्चे हैं जो वोक बन रहे हैं उनको पकड़िए। And Dada has really put the finger on the pulse, you know, and it's, I'm amazed. Dada, are you an independent? Were you an independent MLA or from? Does terrorism have religion? Hindus must come onto the streets then. Use the Supreme Court's Brahmastra and say Hindu temples must be under the control of Hindus. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। पिछले वीडियो पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया, इसलिए नई वीडियो लेकर हम आ चुके हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला और मेरे लिए भी होने वाला है। तो आज जो मैं जिस डेट को आज शूट कर रहा हूँ तो ये है 21 तारीख की शाम। तो मतलब अगर ये वीडियो कल आती है या फिर परसों आती है तो आप लोग जब भी देख रहे हो तो इसे प्लीज़ टाइमलाइन से मैच कर लेना। तो फिर आज के वीडियो के बारे में बात करें उससे पहले हम बात कर लेते थोड़े अयोध्या के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अयोध्या में इस समय होने वाला है सबसे बड़ा राम उत्सव, जिसमें भगवान राम की वापसी हो रही। 500 सालों का इंतजार फाइनली पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो इसके लिए आप सभी को क्या क्या करना है ये सब आपको पता ही है, बट मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ थोड़ा सा। बस आपको अपने घर को सजाना है, अपने घर को साफ सुथरा करना है, आसपास के मंदिर में जाना है एंड साथ ही अपने घरों पर दिवाली मनानी है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पल होने वाला है, जिसे देखने के लिए हमारे 500 साल से पीढ़ियाँ तरस गई थी। वो हम लोग कितने लकी हैं कि इस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों को फॉलो करो। बात कर लेते हैं आज की इस डिबेट के बारे में। तो आज की इस डिबेट में आपको देखने को मिलने वाले हैं हमेशा की तरह J.Sai दीपक, जिन्हें देखकर मेरी ऑडियंस बोलती है वाह भाई मजा आ गया। तो मतलब उन्हीं की डिबेट ये होने वाली है। साथ में इसमें आपको अलग से तड़का लगाने के लिए आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं आनंद रंगनाथन जी, जिनकी पिछली डिबेट थी और काफ़ी चली। तो प्लीज़ एंड तक जरूर से बने रहिए। तो डिबेट में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। इस डिबेट में बात हो रही होती कि हिंदुओं को बाद में क्या करना है, मतलब कैसे किस तरह संगठित होना है, क्या करना है, कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। और इसी में सरकैज़म लेके आते हैं J.Sai दीपक और आनंद रंगनाथन, जिसे देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डिबेट ये होने वाली है। ऐसे फाइटफुल डिबेट देखने से अच्छा है कि आप कुछ ऐसा डिबेट देखो जो कि आपको नॉलेज भी दे और साथ ही आपको सरकैज़म लेवल की बढ़ाएं। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। एंड अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। यहाँ पे रेड या व्हाइट कलर का आपको बटन दिख जाएगा, ये मस्ट है, तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। क्या बात है, चलिए शुरू करें। Has really put the finger on the pulse, you know, and it's, I'm amazed. Dada, are you an independent? Were you an independent MLA or from? आज तक कभी किसी कांग्रेस एमपी ने इतना कभी किया होगा क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को? दिस इज द डिफरेंस. प्लीज रिमेंबर दिस एंड री-elect him. And I am also removing my nota thing, and I am if I can. But I'll tell you the disconnect, and this is why Sai, when he says that when people come to power, what happens? I will ask you a question, and please raise your hands, Okay. and then I vouch for it that not a single BJP politician will ever raise the hand on this question. The question is, does terrorism have religion? Name one BJP minister, leave minister, कार्यकर्ता, who will say openly that terrorism is. वो उल्टा, अरे हम तो बता रहे हैं आपको नाविका जी, राहुल जी, टेररिज्म का रिलीजन है ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और यहाँ लोग डेटा पे डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं पागलों की तरह कि 31,000 टेरर अटैक्स हुए हैं बेस्ड ऑन पीपल सिंस 9/11, एंड यू आर सेइंग टेररिज्म इज नो रिलीजन। बट टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, which was, can Hindus do something? I think the government has to do. Hindus have elected it. But I have changed my view. There is a little bit of this anarchic कीड़ा that has gone into me ever since Supreme Court said on farm bills कि भाई वो कहाँ हैं जो कि pro farm bills हैं, वो तो हमें दिख ही नहीं रहे हैं. Basically, they wanted 86% of Indian farmers to come onto the streets, not till the land and produce farm produce, but they wanted those 86% farmers to come onto the Supreme Court and say, look, we want these farm laws. This is what our country has been reduced to by the judiciary. ये भगवान क्या जुल्म है? Ki those who are doing their work in far-flung areas around India, who are creating wealth, who are making produce, they have to leave all this, and Supreme Court wants, because it wants to see, it only sees the anti-farm bills. It wants to see the pro-farm bill protesters, so they have to come.
But if be that as it may, I think Hindus must come onto the streets then. Use the Supreme Court's Brahmastra and say Hindu temples must be under the control of Hindus. Lakhs of crores of money that is legitimately Hindu is being lost, is being gained by the government because the temples and their land is in the control of the government. The government is dictating how and preventing Hindus from running their own colleges, their institutions, their Vidyapeeths, everything. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. But Hindus are being prevented. What are Hindus going to do for the last 5, 6, 7, 8 years? People like Sai and others have been crying, look, government has no business to control Hindu temples. What has happened? This government, your government, BJP government has controlled even more temples in the last 8 years than the Congress had. If it wants, it can overturn the overturning of the 1959 Supreme Court judgment. That Congress overturned. BJP can overturn that overturn. I'm sorry, I'm getting a bit, what's the word for it, inception here. But the whole point is, what are the Hindus going to do? Well, you are absolutely right. They voted this government. This government is a Hindutva government. अब वो ही नहीं कर रही तो क्या सड़क पे आ जाओगे? But I don't want, because all of you are earning, doing money, creating wealth that anyway this government is taxing to run. अब आप वो सब छोड़ के सड़क पे आओगे? What can be worse than that? So, of course, Chef, there are issues that Hindus can tackle. But I think this seed of anarchism, unless it gets into the Hindus, which would be a tragedy, I don't think the Hindus' issues can ever be solved. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. There's a simpler way forward. Don't release our temples. Declare yourself a Hindu state. गाइस अभी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से क्या करना है। एक विजन जो दिया है जैसा दीपक ने और आनंद रंगनाथन ने, वो देखने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और साथ ही एंड तक देखिए ताकि इस वीडियो को रीच ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो इसे फटाफट से एंड तक पूरा देखिएगा ताकि इसकी रीच बनी रहे। You can't have it both ways. That's it. You choose what you want to do. पैसा चाहिए तो परिचय को बदलो. That's it. Otherwise, I don't see the point in filling your coffers. Well, you are absolutely right. That's one. But what is it that we can do as Hindus? One, don't leave Bharat for California. Please. Kindly, please. गांव छोड़ दिए, शहर छोड़ दिया, भारत छोड़ दिया, तो बचा क्या? किसके लिए लड़ रहे? मेरे को समझ में नहीं आता है। वहां से क्या you will want to form a diaspora fighting for a country which has vacated the country? Kindly, please stay in Bharat. This is the way of the future. If you're looking for perhaps being a part of the most interesting, exciting generation, notwithstanding the troubles and challenges ahead, this is the place to be. Bharat is the battleground and Bharat is the way of the future. यही नहीं, अभी और सुनिए। I am not saying this for any other reason. शिवलिंगों का अपने आप बाहर आना अपने आप में कुछ संकेत है, if you're a believer. Idols which have been, I'm a hardcore believer. I hope that doesn't offend you. Absolutely not. Absolutely. Hardcore believer. इतनी सारी मूर्तियां जो 400 साल 500 साल दबे पड़े थे वो बाहर निकल रहे हैं. The explosion of interest in Bharatiya Sanskriti is tremendous. The voices that are being produced. I am a low-grade hustler. Ignore me. The number of Shastric voices coming out, trying to protect traditions, who don't get the kind of space and the social media position advantage that we get. So, these are signs. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? And Dharma believes in cosmic signs. I cannot ignore that. 3. संस्कृति को बचाने से पहले परिवार को बचाइए. जो आपके बच्चे हैं, जो वोक बन रहे हैं, उनको पकड़िए.
मुझे क्यों तोड़ा? Because the motto of the left is you have power, we have your children. And they're investing in the future heavily. The rubbish from the United States has been refused by France, but India still doesn't have the guts to refuse it. I will never subscribe to gender specific binary, non-binary pronouns in my life. Yeah, boy. I will never do this. This is internet karma. I'm saying this. I will never redact this particular position. तो अगर आप यहाँ तक डिबेट को देख रहे हो तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ रेड और वाइट कलर का बटन आपको दिख जाएगा एंड साथ ही वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ शेयर करने को, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। As a Sanskriti that has dedicated temples for transgenders, which has celebrated in its own way, I don't need to learn your refuse. One, you don't need to teach us how to treat these people. They are our people. Emotional damage. The worst of terms which are used to address them don't come from Hindi, they come from Urdu. Therefore, we have our own ways of, let's say, looking after our people. 3, at least at home, have a 3-tier system wherein the Matrabhasha finds some space. How many can write now in mother tongues? Thank you. I'm so grateful. Are. मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। And force your native press to not simply transliterate English words in Marathi or Hindi. Computer ko computer mat bolna. I'll tell you why I'm so proud of Tamil language chauvinism. I'll say this. Let me just answer this question and I hope I don't offend sentiments here. If I do, that's okay. The point is, Yeah, boy. retain your mother tongues. There is a reason why you have Ishtadev as a concept. You owe your duty to 3 sets of devatas. Kula Devata because that protects your collective identity as a group and the traditions that go with it. Your Grama Devata, which is your guardian deity. Your Ishta Devata you choose according to your nature. That's exactly why Dharma offers you this 108 baskets. Choose what you want or mix and match. And choose a deity according to that. And once you have chosen or subscribed to that, please make sure that at least once a week you dedicate in some form to that particular deity, because all this talk is useless because you have to match the other guy in his commitment to his deity. Talk somewhere I said this. The principle is what I'd call the SIP principle. Spiritually fit, intellectually fit, and certainly get physically fit. Make one trip to Israel and you'll realize not one gentleman I saw there had a punch. Once I came back, I realized kuch na kuch to karna padega. I can't go like this. बात तो सही है। So each of these components are important because it makes a difference. One of the reasons that Guru Gobind Singh specifically had physical attributes for the Khalsa, especially the beard, is to invite and invoke fear. The kada was a sign of metal and kshatra. They still call the weapon, the art of learning weapons in their own corrupted form, Shastra Vidya. It's nothing but Shastra Vidya. So my suggestions would be the following. Hinduism, as Rawatji said, unlike Islam, is rooted to a particular bhumi, which is why you pray as you worship to the bhumi as well. It's a consecration that happens with every ritual, so protect and stay. This is your land. Others can leave because it's not their motherland. This is our mata. You can't leave. यही नहीं, अभी और सुनिए। Protect your children, your language, and we don't have the voluntary concept of zakat, fortunately so. 10% to any organization that does service for dharma in some way. Hindu hai to bandhu hai is the bottom line. Thank you.
जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे J.Sai दीपक और आनंद रंगनाथन ने अपने अपने सरकेजम को अलग लेवल पे रह गए। साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक एंकर ने भी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बातें, जो भी क्वेश्चंस थे वो जनता के थे, उसे एंकर ने एक सूचीबद्ध करके एक क्रम में रखा और उसे एक साथ पूछने का प्रयास किया, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है J.Sai दीपक और आनंद रंगनाथन ने। आनंद रंगनाथन ने यहाँ पे सबको बताया कि क्या ज़रूरतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे इसमें, और J.Sai दीपक ने उसका सॉल्यूशन आपको बताया। जब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आनंद रंगनाथन ने जो मुद्दा उठाया कि हमारे मंदिरों को टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि अदर रिलीजन्स कोई भी ऐसे आपको नहीं पता होगा कि हमारे मंदिर सिर्फ ऐसे हैं जो टैक्स भरते हैं सरकार को, और फिर भी अगर पैसा सरकार का कुछ भी थोड़े मंदिरों के लिए ऊपर लग जाता है, या फिर वैसे तो मंदिर के ऊपर लगा नहीं है बट अगर लग जाता है, तो यहाँ पे भी लोग सवाल पूछने लगते हैं। तो भाई अगर हमारे मंदिरों से पैसा जा रहा है तो हम अगर उसका 1% भी हमारे मंदिर पे बनने में या फिर किसी रख रखाव में खर्च हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि हमारे मंदिरों को फ्री किया जाना चाहिए, जैसे कि अदर रिलीजन्स करते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन से आए हुए पैसों को अपने लिए यूज करते हैं, वैसे हिंदुओं को करना चाहिए, जिससे हम अपने मंदिरों से आए हुए पैसों को गुरुकुल बना सके या फिर अदर चीज़ें कर सके, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिसे आनंद रंगनाथन ने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा, और वहीं J.Sai दीपक ने इसमें बताया कि किस तरीके से अगर आप मतलब आप मंदिरों को टैक्स फ्री नहीं कर सकते तो इसे हिंदू स्टेट घोषित कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एक सच्चे सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चे सेकुलर सरकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फिर एक इंस्टीट्यूशन, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से पैसे क्यों ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है। तो यहाँ पे J.Sai दीपक ने इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बातें की, और साथ ही यहाँ पे सबसे बड़ी बात की वोक बनने पर, जो पे आपने देखा होगा कि हमारी जो युवा है वो वोक बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने धर्म का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, मोस्ट जगह पर मॉक करना, या फिर आप लोगों ने मेम्स पे या फिर बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को देख लिया हो जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं लेफ्टिस्ट, तो वो सब चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे J.Sai दीपक और आनंद रंगनाथन जी ने हैंडल किया और किस तरीके से अच्छे तरीके से समझाया, ये आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो को सबके पास पहुंचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए जितना हो सके इस वीडियो को, और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दिवाली मनानी है तो फटाफट से लग जाइए दिवाली की तैयारियों में। कल वीडियोस नहीं आएंगी क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने काम में, अपने दिवाली में अपने परिवार के साथ बिजी रहें। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।